Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to start a new series of our spoken English course by Nagin Best Digital Learning. This is our channel name. Hope you will like it and each and every point we will clear to you and this will be very useful for your daily life communication. So here let's start it. As we see in a different time of the day, how we use the time, like morning, we only use morning word, afternoon, evening, night. These are very simple words, but there are some different timing also in a day which occur and we use different words for this communication. So let's start it. The first word, that is time of the day, it is midnight. Midnight, you all know. Midnight, it is a specific time of the day that occur exactly at the middle of night. Middle means बिल्कुल बीच में, रात के बिल्कुल बीच में, मतलब मिडल में जो टाइमिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मिडनाइट बोलते हैं. इट इज प्रिसाइसली 12 o'clock एट नाइट, जब घड़ी में 12 बज जाए. राइट, इट इज 12 o'clock. 12 o'clock when one डे एंड्स, एक दिन खत्म होता है. राइट, वन डे एंड्स और दूसरा एक नया दिन शुरू हो जाता है. नेक्स्ट डे दैट बिगिंस. राइट, so midnight means the middle of the night. It is the middle of the night, 12 o'clock at night. Right, some examples are here. Cinderella had to leave the ball. Cinderella को बॉल को छोड़ना पड़ा. क्यों छोड़ना पड़ा? यहाँ पर उसको जाना था. राइट, स्टोरी सबको याद होगी. तो उसको कितने कितने बजे से पहले? 12 बजे से पहले, बाय मिडनाइट. राइट, आई मेनली गो टू बेड. मैं अधिकतर बेड पे चला जाता हूँ अराउंड मिडनाइट. इंस्टेड ऑफ यूजिंग 12 o'clock, मैं 12 बजे चला जाता हूँ. इंस्टेड ऑफ दिस, यूज दिस वर्ड विच इज midnight. I mainly go to bed around midnight. For example, if you look at the clock, when both, here we say midnight is the time. जब आप देखते हैं कि क्लॉक के अंदर, घड़ी के अंदर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं. राइट, द आर एंड मिनट एंड दे बोथ here point directly up, ऊपर की तरफ होती है. ठीक है, this indicate our midnight. Right, in everyday conversation we might hear phrases like let's meet at midnight. हम रात को मिलते हैं. This means the meeting will be take place. This will take place exactly कहाँ? Midnight मतलब कब? कब होगी? 12 o'clock meeting होगी. 12 o'clock at night. Right. One more example. I was up until midnight studying. This indicates that someone was studying until midnight. Right. Her birthday party starts at midnight. तो ये बहुत सारे आपके सेंटेंसेस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो. Her birthday party starts at midnight. उसकी जो सेलिब्रेशन है वो कब? 12 o'clock की बजाय क्या यूज करेंगे? It starts at midnight. Right? वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई कितने बजे? 12 बजे. Right. Now here let's turn to the next word. After midnight, what we are saying? It's dawn. Dawn, DAWN. It's dawn. Right? Dawn is the time when light from the sun begins to appear in the sky before sunrise. सूरज के उगने से पहले. राइट, इट इज अ टाइम व्हेन लाइट फ्रॉम द सन बिगिंस टू अपीयर. धीरे धीरे सूरज निकल रहा है. आपने देखी होंगी, कुछ सीनरीज देखी होंगी. राइट, इस तरह से जब सन अपीयर होना शुरू होता है, दैट टाइम वी कॉल्ड इट dawn. इट्स अ टाइम व्हेन द सन राइजेस और कम्स अप. पूरा नहीं आया, निकलना शुरू होता है, उस टाइम को हम क्या बोल रहे हैं? dawn कह रहे हैं. It is referring to the early light. You can say it is the early light of morning. सुबह सुबह हल्की हल्की जो किरण दिखाई देती है हमें सूरज की,
when the sky begins to lighten and sun is about to rise. It's about to rise. It's not rise. It's about to rise. It marks the transition from, इसका मतलब वो जो रात दिखाई दे रही थी ना, वो नाइट से अब क्या होने वाला है, दिन होने वाला है. During the dawn, the sky often display a range of colors. बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर दिखाई देते हैं, ब्लू कलर दिखाई देते हैं, पर्पल दिखाई देता है. तो वो जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है. अब कौन सा कलर दिखाई देता है? You can see here in this, it changes to pink color. This is sunlight, right? Pink and orange color appears in the sky. This shows that now it's a time of dawn, right? Dawn, sometimes you see that it's a poetic, evocative term that is often used to describe a peaceful and serene moment in the nature. It's a time when the world is waking up. इसी टाइम पर तो सब जगना शुरू होती है, बर्ड्स की चिपिंग होती है, बर्ड्स आर बिगिनिंग टू सिंग एंड देयर इज अ सेंस ऑफ क्वाइट एंटिसिपेशन फॉर द डे अहेड. इसके बाद ही पूरा दिन शुरू होना चालू हो जाता है. So what are the examples here? He always get up to greet the dawn. वो सुबह सुबह क्या करता है? उठता है और ग्रीट करता है, इस मॉर्निंग को नमस्कार करता है, उसको आने देता है, आदर मतलब बुलाता है, राइट. ही वर्क फ्रॉम dawn till dusk. dawn मतलब सुबह, बिल्कुल सुबह से उसने काम करना शुरू किया और कहाँ तक? till dusk. dusk के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे. we will come here at the next point, right? तो कहाँ से? जैसे ही सुबह की शुरुआत हुई उसने काम करना शुरू किया. he work from dawn till dusk. सुबह से शाम तक काम को करना, right? Now, let's move to the next word, that is morning. It's morning. It's not morning. It's morning. Morning means the beginning of the day. देखो अभी शुरुआत हुई थी उसको बोलते हैं dawn. Now it's begin, right? वो शुरू हो गया है. कहाँ से? मॉर्निंग पूरा पूरा टाइम होता है. एक डॉन एक लिमिटेड टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है जब सनराइज हो रहा हो. उसके बाद वाला टाइम को डॉन नहीं बोल सकते हम, राइट? मॉर्निंग इज अ टाइम, इट्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कहाँ से कहाँ तक है ये? फ्रॉम फ्रॉम डॉन टू मिड डे. आपके मिडिल वाला जो डे होता है वहां से, शुरू से लेकर, सुबह से लेकर जो मिडिल पॉइंट तक होता है उसको बोलते हैं मॉर्निंग. मॉर्निंग रेफर टू द अर्ली पार्ट ऑफ द डे. बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है, राइट? हम पार्ट करते हैं ना, डे के 3 पार्ट किए हुए हमने, राइट? मॉर्निंग, देन आफ्टरनून एंड देन इवनिंग, राइट? सो हियर morning refer to the early part of the day. This is the early part, beginning at the dawn and extending until around noon. It is a time when the sun rises and daylight gradually replaces the darkness. पूरी जो रात होती है वो खत्म हो जाती है और पूरा दिन होना शुरू हो जाता है, right? Okay, and it, then we can take the example here, when you wake up and it's still light outside, you know it's a morning, right? People often start their day, कैसे start करते हैं? Morning में start करते हैं. It's morning, right? गेटिंग रेडी टू वर्क, जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाया जाता है, ठीक है? जितनी भी डेली की एक्टिविटी होती है वो होती है किसमें? मॉर्निंग में होती है. मॉर्निंग इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द डे रूटीन. डेली रूटीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट? And sets to the tone for the rest of the day. It's a time associated with the freshness, you can say, right? New beginning. It's a new beginning and the potential for the productivity and success. So what are the examples here? It is a very beautiful morning. It's a very beautiful morning, right? I go to the school in the morning. We know we all go to the school in the morning, right? It's morning. It's not mornings. Here, next, the next part is after morning, that is midday. Midday, noon. Midday means the middle of the day. It is the middle of the day. Day के बिल्कुल बीच वाला जो part होता है उसको क्या बोलते हैं? Midday. It is known as the noon, right? Midday, we especially we mention here the midday, we call it noon. It is the exact middle of the day, right? It is the exact point
where we say it's a half part, half हो गया, right? Morning से लेकर जहां तक यहाँ तक आएंगे तो it occur at what time? It occur at 12 o'clock. It occur at 12 o'clock, 12 p.m. You know, midnight, that is 12 o'clock a.m. It's a.m. सुबह वाला, राइट? अब आप कहते हैं कि रात को 3 बज रहे हैं, रात को कभी 3 नहीं बजते, इट्स द मॉर्निंग टाइम, राइट? वो 3 a.m. है, इट्स अ मॉर्निंग। जैसे ही 12 बजते हैं अंधेरा जरूर होता है, बट वो जो टाइम होता है 12 o'clock to the dawn, that is completely morning time, right? am लगाते हैं वहां पर टाइमिंग। दैट इज द नेक्स्ट सेशन, जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा कोर्स का, उसमें हम इसको पढ़ेंगे, right? Till then you just study this one. So here it occur at 12 o'clock p.m. What is p.m. here? It's post meridian, right? Which is the halfway. We can say it is the halfway between sunrise and sunset. Let's take an example here, right? Sunset. So let's consider that it sunrise at 6 o'clock. 6 o'clock morning, right? Sunset, that is 6 o'clock. So what is the middle of that? It is 12, right? So exactly the middle part, that is called the midday, right? If you look at the clock at 12 p.m., you know it's a midday now. It is a time when many people take a break, right? We always say the midday as a break time, right? In the government services and the government peoples, mostly the break time is 12 p.m. It's a middle of the day. That is why, right? Lunch or have a main meal, that is during this time, right? So it is the important point in the day schedule as divide. क्योंकि इसने क्या किया? Divide किया. किसको divide किया? Morning और आफ्टरनून को, राइट? मॉर्निंग से अब आफ्टरनून के बीच में जो पार्ट आया उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? वी कॉल्ड इट मिड डे, राइट? क्लियर? Okay, now here let's take some example. She'll arrive in New York at noon. He finally rolled out of bed at noon. So these are some examples. You can use midday also, right? Now here let's see the another word. It is afternoon. It's afternoon. It's not afternoon. It's afternoon. It's afternoon is the time it start at 12 o'clock. So 12 o'clock we are saying midday, right? From here and when the sun goes down, जब सूरज नीचे चला जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का, it's not, see, I'm telling you again and again, this 12 o'clock, this is the particular point, particular time, it is at 12 o'clock only, right? But it's a long period of time, means from कहाँ से 12 बजे से लेकर उस टाइम तक, मतलब शाम के 5 बजे तक का, ठीक है? 12 पीएम तक का जो टाइम होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? आफ्टरनून बोल रहे हैं, राइट? सो इट इज द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन द नून, you can say it is a time between the noon and evening, right friends? It is between the noon and the evening, right? Typically you can say that start from 12 o'clock until early evening, or you can say that before sunset, yeah, right? Sunset से पहले जो time होगा, for example if you have a plan to meet someone in the afternoon, right? So it would be during the time when the day is well underway, but before it start the transition into the evening. रात होने से पहले ही आप उससे मिलिए, means when you meet then it's afternoon, right? It's afternoon. Now here we say जो हमारा स्कूल का वर्क होता है, मीटिंग्स होती हैं, सोशल एंगेजमेंट जो होता है, वो मोस्टली क्या होता है? आफ्टरनून टाइम में होता है, राइट? सो हियर एग्जांपल्स आर, डू यू हैव प्लान्स फॉर दिस आफ्टरनून? इफ नो देन लेट्स मीट टुडे, राइट? तो मीट करते हैं कहाँ पर, कब मिलते हैं? इवनिंग में मिलते हैं या फिर आफ्टरनून में मिलते हैं, राइट? तो ये कहता है कि डू यू हैव एनी प्लान्स for this noon time, right? Now the rain continued to fall all afternoon. कहते हैं बारिश होती जा रही है, कहाँ तक? To all afternoon, right? Now here let's move to the next word, that is evening. Evening is the part of the day between the end of afternoon and night. It's a part of the day between the end of afternoon and night. अभी आपने देखो आफ्टरनून
दैट इज फ्रॉम 12 टू नियर बाय यू कैन से 5 o'clock. और सर्दियों में ये टाइम चेंज हो जाता है, राइट? विंटर्स इट चेंज. नाउ हियर वी आर सेइंग फ्रॉम दिस टू दिस पार्ट, आफ्टर दिस पार्ट द time which is here, that is evening. We call it is the later part of the day. That was the middle part and this is the later part. जो बिल्कुल आखिरी टाइम होता है following the afternoon and preceding the nightfall. राइट, नाइटफॉल से पहले और आफ्टरनून के बाद वाला टाइम. इट बिगिंस एज द सन स्टार्ट टू डिसेंड टुवर्ड द हॉरिजन. जैसे ही आपने देखा ना, डॉन इज अ टाइम व्हेन द सन राइजेस अप, राइट? तो वो जब टाइम, जब हम कह रहे हैं कि जो सन है वो अब नीचे की तरफ जा रहा है, इट डिसेंड टुवर्ड द हॉरिजन एंड द ऑनसेट ऑफ द डार्कनेस. अब अंधेरा होने वाला है, तो उस टाइम को हमने क्या कहा यहाँ पर, वो जो टाइम पीरियड है, इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड, राइट? From 5 o'clock to that part. So that is, we called it evening. For example, if you have a plans to go out with the friends after work, so it will be likely be in the evening. What you will say, that I want to go out in the evening, right? Not afternoon. Evening are the popular time for the social activities. You can say the relaxation when the students go out for playing, right? Some the kids, they play in the park, so like that time of period, that we called evening, right? So in the evening I like to read a book. The rain will continue into the evening, right? So these are the sentences which we can use. Now, this is the main part, that is dusk. As we see dawn, that's dawn is the part that when the sun rises, the dusk also similar to it. But here it's opposite to it, right? So here it is just before the evening, right? Just before the evening. You can say before it's completely dark in the evening. ऐसा होता है कि बिल्कुल रात होने से पहले. You can say that, see this colors, that is same as the dawn. But here when the sun rises, here it goes down. Now यहाँ पर क्या कहते हैं, dusk refer to the period of time in the evening when the sun has set, right? Here the sun has set, but there is still some residual light, right? कुछ ऐसा है कि रोशनी जो है हल्की हल्की हमें दिखाई दे रही है. You can say it's a transition phase, right? Evening से अब क्या टाइम होने वाला है? It's from evening to night now. It's a transition of the time, right? For example, during the dusk, the sky often displays a range of colors, right? From warm orange and pinks to deeper blue and purple. Dawn is a blue purple to the pink color. But here we are saying the dusk is the time when it appears red again. It's now appear to be blue and purples, right? It's a beautiful serene of the scene of the day. Now here examples, the sky and the sun appear red at dusk. Dusk is falling over the sea. राइट आप देखते हैं समुद्र में बहुत सुंदर सुंदर कलर्स हमें दिखाई देते हैं और वो जो अपीयर होता है वो क्या होता है, हमारा डस्क होता है, राइट? नाउ हियर वी आर हैविंग नाइट. सो व्हाट इज नाइट हियर? इट्स अ टाइम व्हेन देयर इज एन एक्चुअल डार्कनेस. अब देखो वो टाइम था कि जब आप कह रहे थे कि जो सन था वो सेट होने वाला है. अब सन सेट हो जाएगा तो वो आपको लाइट्स नहीं दिखाई देंगी, राइट? तो नाउ इट अपीयर्स डार्क, राइट? अब आपको पूरे में डार्कनेस दिखाई दे रही है, राइट? आफ्टर सनसेट क्या होगा? डार्कनेस होगी, राइट? तो सनसेट से लेकर सनराइज तक की डार्कनेस क्या रहती है? कंटिन्यू रहती है. सो इट रेफर to the period of time when it is dark outside, typically from sunset to sunrise. It is just opposite of a day, right? It's absence of natural sunlight. यहाँ पर तो होती ही नहीं है ना light, ठीक है? When you look outside and everything is shrouded in the darkness, you know it's night, right? So here night's a time when most of the people rest, sleep, right? वो टाइम है. Now here examples are, an owl is the king of the night. आपको पता ही है उल्लू जो होता है वो क्या होता है? किंग होता है नाइट का, क्योंकि वो उसी टाइम पर जगता है. लास्ट नाइट दे स्टेड एट होम एंड वॉच टीवी. लास्ट नाइट दे स्टेड एट नाइट, वो घर पर रुके और उन्होंने टीवी देखा. तो वो क्या है? नाइट के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सनराइज. एंड इन यूएस वी यूज दिस वर्ड दैट इज सन अप.
right? So sunrise is a time in the morning when the sun start to rise in the morning, right? It's a time जब ऐसा है कि सन राइज होना शुरू हो रहा है, ठीक है, उगना शुरू हो रहा है. यू कैन रेफर टू द मोमेंट व्हेन द सन फर्स्ट अपीयर अबव द हॉरिजन इन द ईस्ट, राइट. इस डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि जो सन है वो अपीयर होना शुरू होता है, ठीक है. इट्स अ ब्यूटीफुल नेचर फिनोमिना, राइट, जिसमें पूरे के पूरे जहां अर्थ जो होती है उस पर लाइट्स आनी शुरू हो जाती हैं, राइट. एग्जाम्पल, इफ यू वेक अप इन द अर्ली इनफ यू कैन विटनेस द स्टनिंग कलर्स and light that accompany a sunrise. Example, you can say the rain begin before sunrise, right. Get up at sunrise and sleep early. Get up at sunrise, जल्दी उठना चाहिए और जल्दी ही सो जाना चाहिए. So sunrise is often associated with a sense of renewal, राइट. बहुत नई चीजों के लिए, होप के लिए, स्टार्ट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए जो यूज होता है, राइट, दैट इज सनराइज. नाउ हियर वी हैव सनसेट. ऑल नो दैट्स अ टाइम इन द इवनिंग व्हेन द सन डिसअपियर, बिल्कुल नीचे चला जाता है सूरज, राइट. तो ये जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, सनसेट. एट सनसेट द सन लुक्स एज इफ इट इज गोइंग डाउन, ऐसा लगता है कि सूरज नीचे जाता जा रहा है. द फिशरमैन सेट आउट at sunset for the night's fishing, right. रात को मछली को पकड़ने के लिए. The sunset are often associated with the feeling of calmness, reflection, transition from, क्या हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, डे से अब नाइट हो रहा है, ठीक है. You can take example, if you are near a beach or an open field in the evening you might have the chance to witness a stunning sunset. आप देख सकते हैं बहुत सुंदर एक सनसेट दिखाई देता है, right. So it's a breathtaking natural event characterized by the vivid colors, gradual dimming of light. धीरे धीरे रोशनी क्या होती है, कम होना शुरू करती है. Now here we have next word, that is daylight. So daylight is the light of a day. It is the light of a day. दिन की जो रोशनी होती है उसको हम डे लाइट कहते हैं. इट इज द नेचुरल लाइट प्रोवाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन के टाइम पर जो हमें सन की रोशनी दिखाई देती है, सॉरी दिखती है, हाँ बिल्कुल. इट इज द इल्यूमिनेशन यू कैन से दैट अलाउज टू सी, जिसकी वजह से ही तो हम चीजों को देख पाते हैं. एंगेज इन एक्टिविटीज विदाउट द नीड फॉर द आर्टिफिशियल लाइटिंग, बिना किसी बल्ब के या फिर किसी ट्यूबलाइट के हम चीजों को देख पाते हैं. सो दैट टाइम वेयर वी कैन सी द लाइट ऑफ अ सन, or you can say a day, that is called daylight, right. Here you can take the example, I like reading by daylight, I prefer to work in natural daylight, right. For example, one more example, you can say when you open your curtain in the morning and room is filled with the natural light you are experiencing what, the daylight. हाँ, बाहर से daylight आनी शुरू करती है, ठीक है. तो this is the time. Now this time period we have studied now. ये हमने पढ़ी थी अभी. This is midnight, रात के 12 बजे. उसके बाद वाला जो टाइम पढ़ा हमने वो पढ़ा था हमने, ये मॉर्निंग टाइम चल रहा है हमारा. This dawn, it's here sunrise 6 o'clock, right. This complete here, it's a morning from this to this, right. This is here midday, we call noon, the middle of the day, you can say. From 12 to this we call here afternoon, right. This part when the sun disappears or it goes down, that is called dusk. From dusk to midnight we called it night, right. So these are the parts of the timings you can say of a day. If you like the video, please share it with your friends and subscribe the channel so that you will get the updates of our upcoming videos. Thank you. Bye bye.